तो जनाब, आज मैं आपको एशियन साइट पे बने हुए एक फोर्ट्रेस की सैर करवाऊंगी जिसका नाम है एनातोलियन फोर्ट्रेस। एनातोलियन फोर्ट्रेस उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं और तुर्की की ज़बान में उसको एनादोलुहिसारी कहते हैं। The Anatolian fortress is located in Beykoz, which is on the Asian side. Anatolian castle sits on the most narrow point of the Bosphorus. The fortress sits on what was once a temple dedicated to Zeus, king of the gods, according to the Greek mythology. ये जो कासल है ये एशियन साइट पे वाक़या है और आप बहुत आसानी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वहाँ जा सकते हैं और ये तकरीबन कादेकोय से आधे घंटे की दूरी पर वाक़या है और इलाके का नाम बेकॉज है। और उसके अलावा अच्छी बात ये है कि ये ऑलमोस्ट एवरीडे खुला होता है और उसके दरमियान से आप एक मेन रोड है जो गुज़र के जा रही है कासल के दरमियान से। और ये उस जगह पर बनाया गया है जहाँ पर बॉस्फोरस का एशियन साइट का किनारा और यूरोपियन साइट का किनारा सबसे नैरो जगह है, वो सबसे करीब तरीन जो इलाका है उधर बनाया गया। और उसके फेसिंग ऑन द यूरोपियन साइड दूसरा कासल है जो कि रोमेली फोर्ट्रेस जिसको कहा जाता है। The castle is still very well preserved, so you could get a true feel of how it might have looked when it was newly built. The towers are almost 82 feet in height and around 16 feet maximum thickness in places. The central tower is square and the walls are set in a pentagon pattern featuring watchtowers on each edge. It is a great example of typical Turkish architecture of the time and also one of the oldest around. The tower is perched on a high rock covered with earth. This tower, which consists of 4 floors, is entered through a door located in the southwest today. The inner castle walls of Anatolian fortress, on the other hand, are 2 or 3 meters thick, surrounding the main castle, and there are 4 towers on it. Just north of the castle, you'll be able to see the second bridge over the Bosphorus, which is called the Fatih Sultan Mehmet Bridge, which often serves visitors to the city from Sabiha Gökçen Airport over to the European side of Istanbul. The outer castle walls are multi-arched and polygonal walls. It joins the inner castle walls from the southeast and northwest and is protected by 3 towers on it. When the Turks arrived in Uskudur under the rule of Orhan Gazi, the Ottomans became a major player on the forefront. Along with the Ottomans, there had been 3 other strong powers that had deep desires of controlling the Bosphorus. They included the Venetians, Genoese, and Byzantines. They had strong economic influences in the region as well as a very well organized trade route, and their only motivation was trade. As no gate into the castle was made when it was first constructed, the castle was entered by a suspension bridge from the walls. The upper floors were reached by wooden stairs inside the fort. From the top, you can see the Rumeli fortress across Bosphorus, which is on the European side. So the Rumeli fortress was constructed in 1452 under the edict of Fatih Sultan Mehmet, just on the opposite side of the Anatolian fortress. While this new tower was being built, the Anatolian fortress was also repaired under the edict of Sultan Fatih. The fortress was built as a guard fort in the narrowest part of the Bosphorus Strait, 660 meters, under the Ottoman Sultan Bayezid I in 1393 to 1394, and it was intended to prepare the siege of Constantinople, now the city of Istanbul.
Mehmed I's grandson, Sultan Mehmed II, fortified the fortress with a 2-meter wall and 3 additional towers, and also added additional extensions, including a warehouse and living quarters. As a part of his plans to launch a new military campaign to conquer Constantinople, Mehmed II, on the opposite of the Bosphorus, which is the European side, built another fortress named as Rumeli Fortress. After that, the two fortresses worked in tandem in 1453 to restrict all sea traffic along the Bosphorus, thereby helping the Ottomans achieve their goal of making the city of Constantinople, later renamed Istanbul, as their new imperial capital. After the Ottoman conquest of the city, Anadolu fortress served as a customs post and a military prison. Finally, in the 1990s, the castle was restored but never opened for public. Today, only a part of the fortress remains, and it is clearly visible from the Bosphorus and the nearby streets. After the foundation of the Turkish Republic, the Istanbul municipality restored the Anatolian fortress. Shortly after, the roadway was built between Beykoz and Üsküdar, and it passed directly in the middle of the fortress, which led it to lose its original appearance. While the roadway was being constructed, the wooden houses that stood nearby the Anatolian fortress, they were first publicized and then demolished to make the fortress look nicer. एनाटोलियन फोर्ट्रेस में बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, स्पेशली वीकेंड्स पे, जहाँ से आप ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ से बॉस्फोरस का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है. और फोर्ट्रेस के साथ ही बाहर जब आप निकलते हैं वहाँ पे टी गार्डन्स हैं, कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ से पहले एक ज़माने में गोक्शु स्ट्रीम थी एक, वो बहती थी और उसका पानी जाके समंदर में गिरता था. Anadolu is now an open-air museum, but only the outer walls can be seen. So the best you can do, अगर आप बाहर हैं, बाहर से देखना चाहते हैं, तो आप you can buy some simit, Turkish चाय जो है वो पी सकते हैं. You can sit on the nearby bench in the park, which is right next to the castle, and you can enjoy your time there. शोर बहुत होता है. It's a very noisy area because of the traffic जो कि वहाँ से मुस्तकिल गुजर रही होती है. और इसके अलावा अगर आप म्यूज़ियम के अंदर जाएं तो अंदर आपको जाके पूरा आप फोर्ट्रेस का एक टूर कर सकते हैं. यू हैव टू पे फॉर इट, तो आप एंटर होते वक्त पेमेंट करके और फिर आप अंदर जा सकते हैं. फोर्ट्रेस के अंदर जब आप जाते हैं और टॉप तक अगर आपने जाना है तो बेशुमार सीढ़ियां हैं. जैसा कि आपको मैंने बताया कि 4 फ्लोर्स पर है ये जगह बनी हुई. तो आहिस्ता आहिस्ता आप चढ़ें और बड़ी आराम से आप वो कवर कर सकते हैं तमाम सीढ़ियाँ. और ऊपर जाके जो व्यू है, इट्स वर्थ इट कि आप ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाएं. इतना उम्दा व्यू और सनसेट्स और सनराइज़ बॉस्फोरस के हैं ही बहुत खूबसूरत. अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों के लिए इस्तांबुल में नहीं हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना एक दिन एशियन साइट के लिए रखते हैं और वहाँ पे आप एशियन साइट पे मरमरा के थ्रू भी जा सकते हैं. और इसके अलावा आप वहाँ से फेरी के ज़रिए भी जा सकते हैं. और जब आप वहाँ जाते हैं तो आप ऐसा करें कि आप 2 चीज़ें अपनी लिस्ट पर ज़रूर रखें, जिसमें से एक चमलीजा मॉस्क है, जो कि आप सुबह जब अर्ली निकलें तो आप मस्जिद देखें. वो तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद है. और आधा दिन आप उधर गुजारते हैं और उसके बाद आप इधर फोर्ट्रेस की तरफ आ जाइए और आके फोर्ट्रेस को एंजॉय करें, उसको देखें. इतनी हिस्ट्री है, इतना सब कुछ है. और जब मैं वहाँ वॉक कर रही थी मुझे लग रहा था मैं पता नहीं कहाँ पर हूँ, और मेरे इर्द गिर्द वो पुरानी आवाज़ें, आई कुड हेयर के उस ज़माने में किस तरीके से लोग क्या करते होंगे और किस तरीके से ये सब कुछ होता होगा. तो वो एक लगता है कि एक फेरी टेल टाइप कहानी लगती है जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं. इन पुरानी जगहों की अपनी एक कोई वाइब होती है और अपनी कोई फ़ील होती है. और जिस शख्स को हिस्ट्री और उसका शौक़ है वो ये बहुत एंजॉय करेगा, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है इससे रिलेटेड कि आप अक्ल दंग रह जाती है किस तरीके से क्या कुछ जंगें लड़ी गई, क्या कुछ हुआ. और सबसे अच्छी बात है कि जो तुर्की की
हुकूमत है उसने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, चीज़ों को बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है बहुत ही उम्दगी से. We have to bend. Oops. ध्यान से. Let's Over time, the area around the castle became settled, and today waterfront houses and old mansions are dispersed among the castle's ruins.